Hello, dear students, and yes, welcome to my SKI, all of you. And now we are going to discuss about the whole introduction, summary, theme, rhyme scheme, poetic devices about the whole poem, "The Trees" by Adrian Rich. And now the introduction of this poem is here. Actually, the poem, "The Trees" by Adrienne Rich is the symbolic poem which tells about the plants who want to escape the ground veranda and the walls of the houses and want to move into the forest. Why? And the trees are so symbolic, and also the presentation of being women who want to move out of the enclosed wall of the society and escape in the world of freedom. The poet objectively described the escape of the plants to its new environment. And now we are going to the summary, and the whole summary is here. The Trees is a short symbolic poem that focus on the movement of the trees that are initially indoors but seeking to escape to freedom in the forest. In the poem presents a conflict between man and yes, nature. And while nature is free and unbounded, man prefers to live bounded spaces and also want to curb nature, and he uses plants to for interior decoration of houses, cut trees and make houses for himself, kills animals for food and other purpose, and cages them in zoos. So in all these ways, man curbs nature and denies plants and animals the freedom in which they should live. And the poem shows that the tree and plants are rebelling against man as they strive to work their way of out into the open. And the speaker talks about the indoor plants grown in houses and in small pots and pans. So these indoor plants cannot be replacement for the forest, and they are not useful for birds and insects. So भाई जंगल तो जरूरी है ही, किसी ना किसी पर्पस से ही बने हैं वो जंगल, तो हमें उनको नष्ट नहीं करना चाहिए. So the birds can't sit on the branches and insects can't hide themselves in them. So they don't give any shade. So their twins are stiff. Their bugs on the branches, and insect can't hide themselves, and their bugs like twinly discharges patient, and they are devoted and devoid of light, and their leaves rush towards the glasses window of light because they feel suffocated in their small pots and plants. And the poet is sitting inside the room, and she is writing long letter. It is night time, and she feels the smell of leaves and lichen reaches inside the room, and the poet longs that these trees should strive to get light and air. पोयम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से फरमाई गई है पोएट के द्वारा. पूरी पोयम का सार इन शॉर्ट आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा. केवल सुनने से ही काम हो जाएगा, लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स तो आप बड़ी क्लासेस में याद नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ लर्निंग लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल योर 1 or 2 or 3 pages, you can write your answer by own self after listening the lecture, and you can make the answer by yourself. Yes, this is my bet on you that after listening my whole lectures, yes, you can be able to write all answers by yourself. So there is no need to learn all answers hesitantly. You can write out your answers by yourself after listening my all lectures. So let's start with our theme. देखते हैं थीम पूरी पोयम की क्या है in short. So the poem presents a conflict between man and nature. While nature is free and unbounded, man prefers to live in the bounded space and
also want to curb nature, and he uses plant for interior decoration of houses, cuts trees and make houses for himself, kills animals for food and other purpose, and cages them in zoos, yes, for earning money. In all them these ways, man corrupts nature and denied plants and animals the freedom in which they should live. And the poem shows that trees and plants are rebelling against man, and they strive to work their way out into the open. पूरी पोयम की, जो कि हमारे 4 स्टैंजाज हैं, थीम इस तरीके से है कि जो इंसान है पेड़ों को नष्ट खत्म कर रहे हैं और वो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही सीमित हो चुके हैं, और डेकोरेशन के लिए उनको फिर भी प्लांट्स चाहिए घर के अंदर। तो छोटे प्लांट से हमारे इंसेक्ट भाई साहब का काम चलता नहीं है, चिड़िया रानी का कभी काम नहीं चलता। उनको तो भाई बड़े बड़े शाखाएं चाहिए ना, वो आपके पॉट्स में, आपके गमलों में अपना घर नहीं बना सकती। क्योंकि उनको उनको ब्रांचेस चाहिए होती हैं अपने आप को हाइड करने के लिए इंसानों से। और इंसेक्ट जो कि जंगलों में पाए जाते हैं वो आपके घर में रह भी नहीं सकते, और आप भी उनसे डरोगे वो भी आपसे डरेंगे। तो इसलिए जंगल तो हमारी लाइफ का बेसिक फंडामेंटल है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे ऑक्सीजन का हिस्सा है क्या, जंगल। तो जंगल को बचाने की मुहिम है, और एक तरफ कंपैरिजन चल रहा है इंसानों के लिविंग से, और जहाँ पे पेड़ जो हैं वो आज़ाद स्थिति में रहना चाहते हैं, उनकी शाखाएं कहीं भी जा आ सकती हैं। आप अपने घर में किसी बड़े पेड़ को, जब आपका घर सीमित जगह में हो, आपके पास बहुत बड़ा ब्रांडा ना हो, तो आप अपने पेड़ की कटिंग करके उसको छोटा बना के रखते हो, उसकी बॉन्साइज बनाते हो। तो उन छोटे प्लांट्स के अंदर कहा गया है कि ना तो इंसेक्ट के लिए वो यूजफुल है, ना वो बर्ड्स के लिए यूजफुल है, आपके डेकोरेशन के लिए वो अच्छा है, आपको वो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। लेकिन वहां पे वही एनिमल्स तो नहीं रह सकते ना, नेचुरल हैबिटेट कहाँ जाएगा एनिमल्स के, वहां पे आके शेर, हाथी, चीता रह सकता है नहीं ना। तो इसलिए भाई जंगल तो जरूरी है। राइम स्कीम ऑफ द poem and the whole structure is here on your screen. So the trees is a free verse of the 4 stanzas and making a total of 32 lines. Yes, ये क्वेश्चन के बेस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बेस में। राइम स्कीम में you can take a screenshot and after that you can write down in your text copy, and after that in exam time, before exam, you can focus on these lines and write down all rhyme scheme and whole structure in your copy. So I am 100% sure you can grasp complete marks in your poetry. And next point है, there is no yet rhyme scheme and no regular metric beat pattern. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और वर्बली क्वेश्चन में भी आ सकता है आपकी पोइट्री के अंदर कि उस पोयम के अंदर राइम स्कीम क्या है। बहुत अच्छी राइम स्कीम है, अभी हम जानेंगे पूरी राइम स्कीम के बारे में और पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। सो यू कैन note down these topic for your short question and the rhythmic question. Yes, there is a rhyme scheme, 4 stanzas we have tried out, and there are 32 lines in the poem. So you can write down in your note copy, or you can take a screenshot. After that you can learn it, you can write it into your text copy. सो द राइम स्कीम की बात हो रही है अगर, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस भी यहाँ पे काफी अच्छे देखे गए हैं। केवल 4 स्टैंजास में डिवाइड हुई हुई पोयम है और बहुत सुंदर तरीके से इसकी पर्सोनिफिकेशन है, वो हम आगे जानेंगे पोइटिक डिवाइसेस में। नेक्स्ट हमारी लाइन है जो कि ऐड होती है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। ईच लाइन्स इज डिफरेंट रिमिकली एंड द लाइन्स वेरी फ्रॉम शॉर्ट ऑफ लॉन्ग। सो दीज आर rhyme scheme, and as well as we can say the whole structure of these 4 stanzas, as you can see into 3 parts. So yes, you can write down, and yes, the screen is staying for 5 or 3 minutes here because मैं चाहती हूँ कि आपके पास गोल्डन लाइन्स इकट्ठी हो जाएं इस टाइप की, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं राइमिंग स्कीम से जुड़े हुए या स्ट्रक्चर से जुड़े हुए किसी भी पोयम के, वो अच्छे तरीके से मतलब मार्क्स ग्रैस्प हो जाएं आफ्टर लिसनिंग। पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो सो देयर आर पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट हमारी आती है रिपीटेशन, सेकंड आती है हमारी शिमर,
So poetic devices में अगर हम बात करें, repetition into the forest and the forest that was empty all these days. और एक लाइन हमने इसमें चूज करी है, where no bird, no insect, no sun. Yes, you can see in your textbook. And there is shimli. Where is shimli? Smell is the second and third and the final stanza involve both human and domestic elements. So there are shimli into the 3 points. First, like newly discharged patient. Second, like a voice. Third, like a mirror. सो देर आर शिमिल. यहाँ पे एक कंपैरिजन देखा गया है. सिंबॉलिक पोयम है क्योंकि रिपीटेशन है, बार बार हमारी लाइंस की कुछ वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट किए गए. और हाँ, पोइटिक डिवाइसेस को लेकर के हमने ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर तैयार कर रखा है, काफी अच्छा खासा. तो उसमें उसको पढ़ने के बाद में, लिसन मतलब केवल सुनने के बाद, आप पोइटिक डिवाइसेस किसी भी पोयम में से 1 सेकंड में निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से है, किस तरीके से पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर निकाले जाते हैं किसी भी पोएम में से, वो उसके लिए पूरा एक लेक्चर तैयार है हमारा, और वो आप देख सकते हो हमारी प्रीवियस क्लासेस में. सो फर्स्ट हमने इस पोएम में फाइंड आउट किया हमारे फोर्थ स्टैंजा में, जो कि 32 लाइंस कंटेन करता है. फर्स्ट हमारी आती है रिपीटेशन, सेकंड शिमल. इन नाउ द लास्ट हमारी जो डिस्कशन है अबाउट the poem is no sun bury its feet in shadow, and the second small wings stiff with exertion. थर्ड हमारी आती है लॉन्ग क्रैम्ड बोथ shuffling, एंड द फोर्थ स्टेंजा है आपका जो कि लास्ट स्टेंजा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड्स. So there are, we can say, two poetic devices here we find out: repetition, shimil. And yes, next we are going to discuss about personification. Yes, there are personification also. So look children, there are 32 lines in all your poem. 32 lines. Yes, I am repeating this because this is the important question for your short paraphrases. So 32 lines contain your 4 stanzas. Yes, stanzas are 4 with 32 lines, and each lines contain 3 poetic devices: shimil, repetition, and last personification. So personification is divided into the 4 parts. First, no sunbury at its in shadow. Second, small twig stiff with the extortion. Third, long cramp broad stifling. Third, fourth line हमारी आती है, the trees are stumbling towards. So there is beautiful personification we find out, and you can see and you can note down in your text copy. After that you can learn, you can understand the whole material of questions. If you want to make your answer beautiful, long, lengthy, and meaningful, you can listen whole my lecture very carefully, and after that I'm 100% sure there is no need to learn all long answers hesitantly or repeatedly. ये तो बड़ा टफ हो जाएगा ना कि लंबे लंबे क्वेश्चन याद करने बैठोगे, आप बोर्ड है आपका. तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अपने आप आंसर बना सकते हो आफ्टर लिसनिंग माई होल लेक्चर्स. और यही मेरी कोशिश रहती है कि सभी बच्चे आज के टाइम में लॉन्ग आंसर्स याद ना करके अपने आप से बनाना सीख लें, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो सिमिलियर हो. शॉर्ट मिडिल टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनमें जो भी टेक्सचर है आपका, जो कि स्ट्रक्चर है, वो जो पोएटिक डिवाइसेस को लेकर के हमने अभी डिस्कस किया. एंड यस डियर चिल्ड्रन, सच अ ब्यूटीफुल पोएम, और ये पूरा लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है. सो कीप रीडिंग, ओके, एंड गुड बाय, टेक केयर.